Point number 151. Young girl used a drug for Beckett. Platelets were in normal range. WBC 7,000 count and neutropenia hai. HP was 9. Small immature cell. This is again the point having the same explanation as I told in the previous point. Whenever there is a presence of immature cell and the patient is young, so it may be an acute disorder. और यंग के अंदर सबसे ज्यादा यंग के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर सबसे कॉमन डिसऑर्डर होता है दैट इज ALL, acute lymphoblastic leukemia. So this is lymphoblastic leukemia or acute leukemia. Chloride shift in RBCs, the answer is band 3. Chloride shift के लिए band 3 का word आपने याद रखना है. That is the protein which is forming the cytoskeleton. 41% हेमेटोक्रिट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट. अब 41% हेमेटोक्रिट का क्या मतलब होता है? हेमेटोक्रिट रिप्रेजेंट्स द रेड सेल मास. तो 41% hematocrit mean that there are 41% RBCs. WBCs and platelets are not included in hematocrit. Remember, hematocrit stands for red cell mass. So it is 41%. It means 41% are RBCs. 35-year-old girl has been using analgesic for backache. WBCs जो हैं उसके 7,000 हैं. न्यूट्रोपीनिया है, न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज हैं, HB9 है. अगेन द सेम सिनेरियो, इमेच्योर सेल. दिस इज AL है. कॉज अगर वो पूछे तो कॉज में भी इट में बी ड्रग इंड्यूस ड्रग्स. डिफरेंट एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं दैट आल्सो कॉजिंग ल्यूकीमिया इफ देयर इज लॉन्ग हिस्ट्री. तो आप अगर कॉज पूछे तो कॉज विल बी ड्रग इंड्यूस एज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ड्रग. और अगर डायग्नोसिस पूछे तो दैट इज ALL. एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अक्कर व्हेन AB negative to A positive. AB negative is transfused to A positive. अब AB positive का मैंने आपको बताया था कि that is the AB positive is universal recipient. AB positive, not AB negative. AB negative to A positive कराएंगे तो this causes the reaction. 90 years old. This is not years. This is years. YEARS. Old lady has bruise on the hand and arms. She has no other complaint. Only bruising is present. So this is thrombocytopenia. It may be idiopathic thrombocytopenia. वॉन विली ब्रांड डिजीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि BT आपका इंक्रीज हो रहा होता है और उसके साथ साथ आपका क्या इंक्रीज होता है? PT. तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम बोथ आर इंक्रीज इन वॉन विली ब्रांड डिजीज. लेफ्ट शिफ्ट HB एसोसिएशन कर्व दैट इज एट द हाई एल्टीट्यूड. ये आपके पास जो है ना लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के मल्टीपल कॉजेज हैं दैट आर मेंशन्ड इन रफ्यूला. ये आपने वहां से करने हैं कि लेफ्ट शिफ्ट किन किन कंडीशन में होता है और राइट शिफ्ट किन कंडीशन में होता है. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप एंटीजेंस. दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. polycythemia vera which is primary polycythemia which is not increased that is erythropoietin. अब प्राइमरी पोलिसाइथीमिया के अंदर आपके पास एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज नहीं होता, ये नॉर्मल रहता है. जो आपका सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया होता है दैट इज ड्यू टू सम रीनल कॉजेस, उसके अंदर आपका एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज कर जाएगा. RBCs are they have glycolytic enzyme activity. Factor 8 is produced by ये मैंने आपको जो फैक्टर्स कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स. सो हेपेटोसाइट यहाँ से आप कैंसिल कर दें. इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय हेपेटोसाइट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल. दे मे बी लंग कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स.
Then comes the next point. Patient with low HP has multiple ulcer on the body. Type of anemia is multiple ulcer है, HP low है, तो that is sickle cell anemia. It will be sickle cell anemia. Patient with jaundice having low HB, increased reticulocyte count. अब रेटिकुलोसाइट काउंट ज्यादा है, एचबी कम है, ये वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि रेटिकुलोसाइट काउंट जब डिक्रीज होता है तो इट मींस दैट कि ये क्या है, आपके पास हिमोलिटिक अनीमिया है, हिमोलिसिस हो रही है विच लीड टू जॉन्डस एंड इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट. ट्रू अबाउट प्लेटलेट काउंट. प्लेटलेट काउंट इंक्रीज आफ्टर सप्लीनेक्टमी, थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है. आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पॉइंट दैट द स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द platelets. So when there is splenectomy, no platelets will be destruction, no platelets will be destroyed, so platelet count will increase. In human blood, iron binds to hemoglobin. In stored Iron stored in parenchymal tissue in the form of ferritin. Ferritin is the stored form of iron. Unsoluble form of iron is hemosiderin, that is unsoluble form. Female with weakness and lethargy with RBC is 5.5 diameter and very thin red line of the RBCs in the smear. It means it is microcytic hypochromic anemia. Very thin line RBCs हैं और RBCs weakness है, lethargy है. It may be iron deficiency anemia or other differentials of microcytic hypochromic anemia, जिसमें आपके पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आ सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ सकता है. तो ये सारे आपके पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज हो सकते हैं. रिमेंबर, वेरी थिन लाइन आपका क्लू बताता है कि ये माइक्रोसिटिक है. और हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि आरबीसीज के अंदर जो सेंट्रल पैलेट प्रेजेंट होगा, हाइपोक्रोमेसिया होगा. सप्लीनेक्टमी इज मोस्ट यूजफुल इन हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस. हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर सप्लीनेक्टमी सबसे ज्यादा यूजफुल होती है. ठीक है.